Hey guys, welcome back to Swag Vlogs. So guys, आज is a very exciting day. इतना exciting day इस इतने दिनों बाद है and finally guys things work out कर रही है. Basically हमें एक चीज़ चाहिए थी बहुत टाइम से but वो हमें मिल नहीं रही थी. तो हमने अपना दिमाग लगाया. हमने क्या करा, हमने बार बार ट्राई कराया गाइस. हमने basically आज आपको थंबनेल से पता लग गया होगा we got a new car. हम तो नहीं, पापा जी ने. तो हमने ये वाली गाड़ी लेने की बहुत ट्राई कर रहे थे बट इट वाज लाइक नॉट अवेलेबल इन द कंट्री और बहुत लाइक पंगा हो रहा था उसके वजह से. बट हम कल रैंडमली हमने ऐसा मुंह बना, हम बेसिकली हम पांचों बाहर गए हुए थे बर्मिंघम. एंड बर्मिंघम से आते हुए हमें लगा ओ हम एक और बार ट्राई करके आते हैं, देख के आते हैं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ. एंड वी वेंट इन एंड वी गॉट इट गाइस. विद इन लाइक 1 घंटे में एवरीथिंग वाज डन. Another hot chocolate on the way. और it just worked out so perfectly and it was so amazing. Like it was such like अच्छा moment, you know, it was meant to be. Like it was meant to be. हमें कोई expectation के बिना गए थे हम and it worked out. We are so happy. We are so happy guys. We are so happy. अभी हम ऊबर में हैं बिकॉज हम अपनी नई गाड़ी में आएंगे इधर से. बट अभी मैं, मम्मी, पापा एंड सिमर हैं और गगन दीदी, आशीष तरुण भैया आर कमिंग इन डिफरेंट कार. बट वी आर हियर और हम लेट हैं. हमारी अपॉइंटमेंट 9 बजे थी बट अभी 9:20 हो चुके हैं. सो 6-7 हो रखा है और हम सब मैचिंग कर रहे हैं. सबने वाइफ पा रखा है. वो पापा जी हैं. पापा जी की खुशी इज थ्रू द रूफ. लेट मी आउट. ये फिट है, मम्मी की ये फिट है, ये फिट है. This is my fit. Waiting में because वो गाड़ी रेडी कर रहा है. मन्नू कहती हम लेट हो गए. मुझे लगा हम लेट होंगे बट वो भी खुद ही लेट हैं बिकॉज आज यहाँ बिजी है बिकॉज यहाँ बहुत सारी डिलीवरीज हैं तो टाइम लग रहा है. कपड़े ये आ रहे हैं. ये ओ माय गॉड, ये दे आर सो लेट. क्रैश. थैंक यू. अभी तो आई भी नहीं. ये दोनों बुके ले रहे थे यार. मैं नींबू लाई. गाड़ी के नीचे नींबू रखेंगे. गाड़ी के नीचे नींबू रखेंगे. चारों टायर के नीचे रख देंगे. Thank you. अभी तो आई भी नहीं. Okay, चलें फिर निकले थे. So guys, we are just gonna sit here and chill for a bit because we have to wait for them to come out. So yeah, अभी हम उनकी वेट करेंगे क्योंकि पेपर वर्क रह रहे हैं and he will just sort that out first and then we will just wait here guys and I'm so excited. So super duper excited. Clock it. So yes guys, हमारा बहुत ज़्यादा सपना था गाड़ी लेने का पापा जी का और फाइनली वो आ रहा है. हमारा तो क्या है, वाहिगुरु जी की बख्शीश है और दादा हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ है तो इसलिए हम ले रहे हैं. पापा जी का हार्डवर्क की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी ले रहे हैं. पापा जी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. सपना था पूरा. अच्छा तो लगेगा. एक दिन आएगा जब हम आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे. कोई पता नहीं दूसरी इससे अच्छी क्या करेंगे गिफ्ट जो. सही बात. So yes guys, and we are so happy and so blessed for everything in our life. Yeah. All the paperwork is done now and हमें कीज भी मिल चुकी हैं बट अभी वो जाके अंदर इज जस्ट गेटिंग रेडी, द कार रेडी कर रहे हैं. तो होपफुली 5 मिनट में हम अपनी कार कलेक्ट कर पाए बिकॉज एवरीथिंग इज डन एंड अप्रूव्ड नाउ. Skinny. It is. I am so skinny. You know, type shit.
एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो. पापा उस पर कवर उठाएंगे एंड बूम निकल के आएगी गाड़ी. So guys, everything is done and dusted now. So guys, everything is done and dusted now. और हम यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे थे देर से. अभी हम चार्जर की वेट कर रहे थे. Charger is all set and done. Let's go now. And I'm gonna drive. So nice. Mans doesn't even have a license, so I don't know what issues. I do have a provisional. That's all you got, mate. It's still a license. बहुत ज़्यादा खुश हैं guys, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं. बहुत ज़्यादा खुश हैं. नींद आ रही होगी. Bro, it's so pretty. Like the entire car is so pretty. Perfect. Everything is so perfect, guys. All good? Yeah. Yeah. You wanna say hi to our vlog? Where you going now? I didn't know that I can't run a camera. You can say hi to the vlog. Come on. Say hi to the vlog, man. Hi. Hello. G'da. Sorry, listen, I'll speak it. Is that all you know? Sasrigal G'da. Speak it. Anji. Remember the bad words. And that's something to be proud about. Yeah, melted hanji. That's the best ever, guys. Yeah, he's helped us a lot. Absolute Like legend. बहुत ज़्यादा help करी है इन्होंने हमारी हर point पे हर चीज़ पे, and he's been Fantastic. great. He's been great, guys. Guys, it's time for us to take off. Our baby's going home. It's going home, Mike. So guys, we are so excited to take it home. Clock it. ये इसकी वजह से भी हुआ थोड़ा थोड़ा. अगर ये कन्विंस ना करते तो शायद. My darkest hours, girl, I felt so alone inside of this crowded room. Different curls on the floor, distracting my thoughts of you. I turned into the man I used to be. Put myself asleep, just so I can get closer to you inside my dreams. Didn't wanna wake up and see up inside me. I just wanted to call you and say, oh baby. So guys, finally अब हम आ चुके हैं गुरु घर, और वाहिगुरु जी के ब्लेसिंग्स के साथ ये सब हुआ है, और उन्हीं के ब्लेसिंग्स के साथ हम आगे अपनी जर्नी अपनी गाड़ी से कंटिन्यू करेंगे. एंड यस गाइज, एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड. देखो जी आज भी ठंड लग रही है. हाथ तो वैसे गर्मी होनी चाहिए के अंदर भी. चलो बाबा जी ने इतनी कृपा करी. गुरुद्वारा आई थी हम गाड़ी लेकर. सो गाइज, हमने अरदास करा लिया, हमारा सब कुछ अच्छे से हो रहा है. ना कोई नहीं. एंड अभी हम पता नहीं कहाँ जाएंगे. एंड ओके खासा. to be honest, we are all missing Dadaji so much, but he's always with us, so yeah, we'll be fine. Everything is okay. Yeah. और अभी हम पता नहीं कहाँ जाएंगे guys, कोई आइडिया नहीं है. So काम से छुट्टी ले लिया है. काम पे बोला पेट दुख रहा है. पेट कहाँ दुख रहा है? कहाँ जा रहा है? खाना खा लेने तो पेट दुख रहा है. So guys, अभी हम जा रहे हैं कहीं खाना खाने के लिए, बिकॉज हम सब भूखे हैं, और क्योंकि हम जल्दी में घर से बाहर निकल आए थे सुबह, एंड हम सबको भूख लग रही है. सो वी विल गो ईट नाउ. लेट्स गो. फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए, बट आई डोंट नो कि यहाँ खाना अच्छा होगा या नहीं होगा. बोबा मनु बोबा ची gnarly Tesla gnarly. So yes, we will try and then we will guys. पानी खाने के आगे यहाँ पे कोई शॉप भी नहीं दिख रही है. मैं क्या कर रही है, कोई शॉप भी नहीं है यहाँ. It looks too big.
Looks so goofy man. ऐसे भी हमारा खाना आ चुका है, डोसा एंड ऑल दैट पेल रहे हैं सारे। तो गाइस ये हमारा दूसरा कुछ है, कुछ हमने खा लिया, डोसा खाया, दीदी बिरयानी खा रही, बंदों ने डोसा खाया और वो 3 चिकन रोल रखे हमारे वहाँ। व्हाट द हेल भैया, इतना ऑर्डर क्यों करा आपने? और ये सब भैया खा रहे हैं, मैं तो पैसे भी नहीं कर रही इस चीज़ को। गाइस मैंने सिमर साथ थोड़ा सा डोसा शेयर करा है और मैंने थोड़ा सा मम्मी से कुलचा शेयर करा है, एंड दैट्स इट। 75% शेयर ईच। झूठ है, मैं इसे छूंगी भी नहीं गाइस, बट हाँ एक दो बार यहाँ के CCTV फुटेज निकलवा के देखो फिर। अब हो चुका है खाना पीना, अब हम जा रहे हैं घर। और घर जाकर फिर कोई कहीं जाने का नहीं, घूमना है पता। मम्मी नहीं यार, जस्ट डिस्क्लेमर गाइस, ये नॉन अल्कोहलिक व्हाटएवर शैम्पेन है, आप दिखा भी सकते हो 0% अल्कोहल इन है, so we are not going to promote anything anywhere. Yeah. हमारी गाड़ी में पैक हो चुकी हैं बिकॉज अभी हम जाएंगे घूमने। आज नहीं थके, बंदी आके थक जाते हैं। यस गाइस, और मुझे नींद आ रही है इसलिए पूरे रास्ते में सोऊंगी टू टेस्ट द कंफर्ट कि इस पे नैप लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता, बिकॉज वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मेरे लिए। तो अभी मैं नैप टेस्ट करके देखूंगा इज इट अप्रूव्ड और नॉट। मम्मी ये पकड़ो, बोलो कैमरा गंदा हो रहा। इट्स नॉट गंदा, आपकी शक्ल गंदी आ रही है वो अलग बात है। यू कांट सी द कैमरा इज गंदा व्हेन योर शक्ल इज गंदी। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे एंड अभी हम पार्किंग कर रहे हैं, सॉर्ट आउट। एंड वो पीछे बहुत बड़ी एक लेक है, वो पीछे उधर विल गो बोटिंग देयर। और यहाँ पे फेयर भी लग रहा है, तो हम कहाँ जा भी सकते हैं राइड पे। एक ही झूला लग रहा है वहाँ। और हमें बैक करना पड़ रहा है बिकॉज ये सिमर को पता नहीं कौन सा फोबिया है, खुद पे बैठता नहीं, हमें नहीं बैठने दे रहा। सिमर को बैठाऊंगी अपने साथ इस बार। बिग फैट लेक, और वहाँ पे है बोट्स एंड लाइक बहुत सस्ता। प्रॉब्ली हम सिर्फ बोटिंग करेंगे बिकॉज हम सामान नहीं लाए उसके लिए। एंड यहाँ पे लगा हुआ है फेयर और हमें उस स्विंग में बैठना है, बट इसको डर लग रहा है तो ये हमें बैठने नहीं दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट, बट यस गाइस। यहाँ पे सिर्फ पैदल बोट्स हैं एंड वी डोंट वांट टू पैडल बिकॉज हम सारे आलसी लोग इतने हैं कि हमें पैडल नहीं करना, इसलिए हम बोटिंग ही नहीं कर रहे। हमने गिव अप कर दिया बिकॉज हमें पैडल नहीं करना, इतने आलसी लोग हैं। बट गाइस सच्ची में पैडलिंग इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उससे मैंने करी थी एंड इट वाज वेरी वेरी हार्ड। और इस बार गर्मी भी इतनी हो रही कि पसीने से चूर चूर हो जाएंगे हम, इसलिए हमने सोचा है कि हम इससे ज़्यादा हम उस पे जाएंगे। वो तो हमने वहाँ पे करा साउथ में। हाँ साउथ में करा था। हम फेयर में पैसे लगाएंगे, जितने भी हम बोटिंग में लगाते हैं हम फेयर में लगाएंगे, और तुम्हें फेयर में लगाते हैं वो भी हम फेयर में लगाएंगे, तो हम हर एक राइड कर सकते हैं। यू नो, स्मार्ट डिसीजन। और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और सिर्फ हमें मजे आएंगे, बैठना है हमें। तो गाइस यहाँ पे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, जो झूलों पे नहीं जाएंगे, और झूलों पे जो जाएंगे वो भी झूलों पे जा रहे हैं। फर्स्ट वन ये वाला है, दिस वन इज सो फन गाइस, इतना मजा आएगा हमें इस पे। ओह माय गॉड, आई लव फेयर, आई लव फन फेयर, इट्स सो फन। Scary at all, but only